going to initiate with, yes, of course, recording of this whole session and failure of Bohr's model. So what were the key problems with Bohr's model and where exactly it can create a doubt and suspicion, right? So number one was, this was very unsuccessful in predicting and accounting the energies of line spectra of hydrogen. It could not explain the line spectra of atoms containing more than one electron. Now, remember, a scientist has given us a kind of theme that, okay, these are my postulate. I'm assuming that it will be valid for one electron only. And we are criticizing him that he was saying it is used only for one electron, right? It is not useful for more than one electron. So logically speaking, he himself has given postulate that this is the thing that we want to try. But we can again contradict and criticize. So criticism is very easy, right? This theory could not explain the presence of multiple spectral lines. So why multiple spectral lines are there? That this theory could not explain. This theory could not explain the splitting of electric spectral line in magnetic field, which is called Zeeman effect, or electric field, which is called Stark effect. ये दोनों नाम पढ़ लेना भाई, पूछे जाते हैं एग्जाम में. Zeeman and Stark. कैसे याद रखोगे? Spark, electric. तो Stark, electric. Simple. बोलोगे नहीं? Electric, spark. Right? जैसे ignition होता है vehicles में. Correct. बहुत ही बढ़िया. The intensity of these spectral lines was also not explained by Bohr atomic model. Intensity के बारे में बात नहीं कर पाए कि यार ये intense क्यों है, ज्यादा intense क्यों है, कम intense क्यों है, बहुत सारी multiple spectral lines क्यों हैं, ये सारी problems इन्होंने face की, right? और most importantly, it is single nucleus, single electron model, which itself cannot explain other things. So like for example, somebody want to discuss, let's say, atom of uranium. So 92U238, if you want to discuss, you have to create 91 plus charge so that it has just one electron, which is illogical and wrong, isn't it? You can't have 91 plus uranium. Impossible, right? There's no meaning of it. So the idea here is that these points, this theory fails. But yes, of course, it has given some basic idea about how we use these concepts. Is it clear, bache? So after this, I'm going to proceed with one very interesting discussion. Particle and wave nature of electron, or we can also call it dual nature of electron. Dual or duality. When I use this word dual, it is very powerful word. Dual means both having existence, but together. Both having existence, but together, right? So you must have heard of like dual teacher model. What is dual teacher model? Mentor teacher model and main long-term teacher model put together. It's called dual teacher model. That's what we use, right? Similarly, this is dual nature. One is particle nature, other is wave nature. So when you talk about particle nature of electron, how are we going to represent and what is the representation and what are we going to do? That's one part. Other part is wave nature of electron. That's entirely different scenario, right? How this electron is behaving as a wave. These are two very, very important things to be discussed. The electron we can discuss as particle, though it is very small, very fast moving. You can't locate the positions so easily. Even then you can do that. And when we talk about wave nature, it is all about, yes, correct? So dual nature, we have to understand. And to understand this, we have to understand that if a mass of m has a speed or velocity of v, its kinetic energy is half mv square. I think हर बच्चे को पता होता है. इसकी kinetic energy कितनी होगी बच्चों? Half mv square. Correct? Mass m, velocity v, kinetic energy पूछा जाए तो आप सबका आंसर क्या निकालोगे? Half mv square, right? But just see this part that this particular thing which is in front of us, half mv square, is representing energy in terms of discrete particle. Discrete particle. Now the same thing, if we think for electron in terms of wave, let us see what will happen. First, this is clear what I'm talking about, that particle nature versus wave nature. So if you proceed further, there's a person named Broglie proposed that electron, like light, behaves both as material particle and a wave, which is called duality, two existing together. The proposal gave a new theory known as wave mechanical theory of matter. According to this theory, the electron, proton, and even atoms, when in motion, possess wave property. This is very important line.
आपके पास इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, इवन आपके पास एटम्स हो, इनके पास वेव प्रॉपर्टीज होती हैं. Okay, so how are you going to write this whole expression? You can say E equals h nu or hc divided by lambda. And how do I know this? E is this, correct? And energy of photon is how much? Mc square. Mc square is the energy conversion for photons, right? Because c is the velocity of electron. So if you club these two things together, mc square and hc by lambda put together, let us see what will it become. If you keep it like this, mc square is hc by lambda. So lambda is, yes, how much? H by P. H by P. Or we can say 1 upon, or we can say H by, yes, lambda is H upon MC. कर पाओगे? Everyone please check, confirm that you have understood this much. Then I can proceed further. This is, P is called momentum, and this is MC is also called momentum. So if you know the definition of linear momentum or formula of linear momentum, okay, so it's a quantity which is m vector v, and we can write like this. How many understood this whole part? Please mention in concept clarity poll. Take your time. Very good. Fill कर रहे लोग. All right. So what I can see is almost 70% students understood, 30% could not. So may I know which part you are struggling with in this? Anyone on mic? हेलो सर. Yes. सर इस पार्ट को बैक करिएगा, लास्ट Yeah. पेज. Hmm. सर यहाँ से नहीं समझ में. E इक्वल टू एच, वी इक्वल टू एच H न्यू, इंटू. ये न्यू है बेटा. V नहीं है, न्यू है. ठीक है, न्यू क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था. फोटॉन्स, नोट कर लो, फोटॉन्स और पैकेट ऑफ एनर्जी, right? यस सर. And each photon is having certain frequency. So when we just see energy, it was found to be more the frequency, more the energy coming out of, right? More the frequency of incoming rays, more the energy is coming out for this particular photon. When you just put sign of equality, you get a sign of proportionality constant also with this equality Yes, sign. And this is where we get E is h nu. And this h is called Planck's constant. Fine. Now there yes is sir. again like further details like why this result has come, what is happening here and all. But I think basic stuff is clear. So E is h nu and nu is c by lambda. So can I write h c by lambda? बोलो बात समझ में आती है? Yes sir. और E mc square भी है आपका, right? Which is based on Einstein equation. E is mc square. Anything moving speed of light, you can apply this, right? Now, Yes if sir. you put these two things together, what will it be? Mc square is h c by lambda, or lambda is h upon mc. ध्यान से सोचना. और ये mc को मैंने क्या बोल दिया? mc को तो p बोल दिया because mass into velocity is called momentum. So mass into velocity लिखा था मैंने, उसको बोल दिया momentum है. कोई गलत बात तो नहीं बोली? क्लियर बच्चे? Yes sir. वेरी गुड. आगे चलें. जी सर. So when you equate, yeah, please mute yourself. So we can say lambda is h upon mc or h upon p, right? Which you have got from here. This is called de Broglie's wavelength. De Broglie's, just a minute.
de Broglie state. H and P already we know. What is H? What is P? We already know, right? Is it clear? The whole thing is fine. Okay, now listen to me very carefully. Lambda is, you're writing H upon P. H upon P for me is H upon MV. Okay, there's some problem in this writing, but just give me a moment. Yeah, so you can write H upon P, H upon MV, H upon 2 times half MV square root. Think about it. Half MV square is energy. If you take 2 times half MV square root and keep this 2 also inside. So what will you get? What will you achieve? Check. 2 to cancel. This is MV square, which is going to give you. And we can keep one more M here just to make sure that the whole thing is same. So can you see that this whole thing which is written as kinetic energy of a moving photon? No doubt. Lambda is H upon root 2 Ke into M. कर पाओगे? पूरे फॉर्मूला समझ में आता है बच्चे? Sir, due to bad weather in my condition, internet is off and probably I'm not able to get anything. Okay. रिदम आप सही करिए थोड़ा. अच्छा, रूट कैसे आया? यार एक बात देखो, मैंने mv को लिखा m स्क्वायर v स्क्वायर और उसका हाफ m स्क्वायर अलग कर दिया और बचा हुआ m अलग कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज मेरे को चाहिए था mv. रूट क्यों आया? रूट के अंदर देखो क्या लिखा है, m स्क्वायर v स्क्वायर लिखा है. m स्क्वायर v स्क्वायर का रूट क्या होता है? mv. Ananya, is it clear? Try to understand what I'm telling right now. Very good. So this thing, you can find it here. Lambda is h upon p, h upon root 2 m e. E is nothing but kinetic energy. E is nothing but kinetic energy. पर रूट डालने का क्या लॉजिक है? आई मीन रीजन. ओके, मेरे को एक बात बताओ. K का वैल्यू है हाफ एम स्क्वायर. Lambda is h upon mv. So if you just take this as 2k by m under root, that is v. इसको यहाँ लेके जाओ. क्या मिला? Check. Is it clear, beta? You are taking v, putting it back there, and then solving the value for root 2 me. Can you complete this? Yes or no? तो हमने रूट जबरदस्ती नहीं लगाया कि रूट लाने का कोई शौक था, बट रूट हम कैसे लेके आए? इस तरीके से. m is mass of electron, v is velocity with which it has left here. Complete this quickly. Any problem in this? I think this much is clear to everyone. This much information is fine. Great. So we can use this formula. This is yours. And this will come in number of questions. For example, what is de Broglie wavelength ratio of hydrogen to helium plus? How are you going to solve? You can always use these information based on our understanding that lambda is h upon p. Okay, अब p में क्या क्या change होगा? h तो constant हो गया. p में क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर होगा and मास होगा. तो मास किसका ज्यादा है? z का या h का? ये सारे पॉइंट्स आएंगे दिमाग में कि नहीं आएंगे? Yes.
Accordingly, your lambda will change, will become more or less. So you can always use formula and try to attend these kind of questions. See, one more conversion. If there is a charged body with charged particle Q and potential difference V, and the kinetic energy is E is QV. So again, you do mv square, V square is 2QVM. You do for mv, put it back. Check. आ रहा है? कर पाओगे बच्चों? Excuse me, sir. या सर हेलो, बट अगर हम यस सर बताइए. सर बट अगर हम v की वैल्यू डालेंगे 1 में तो सर ये तो फिर वही इक्वेशन वापस डिराइव होगी वो वे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv वही जो हमने इक्वेशन ही है. पहले लिखा वही था. इक्वेशन है, वही इक्वेशन है, कुछ अलग इक्वेशन थोड़ी है. लैम्डा ही h अपॉन mv है, सेम इक्वेशन है बच्चे, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं आप. ओके, बदलेगी यस भी सर. कैसे इक्वेशन? सर लैम्डा इज h अपॉन रूट 2em, बस मैं e की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ? qv, इतना ही तो कर रहा हूँ. वो सेम इक्वेशन है. उसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर चार्ज पार्टिकल दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाए, तो एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर से थोड़ी निकाल पाओगे, क्योंकि वहां तो v है ही नहीं, स्मॉल v, वेलोसिटी तो है ही नहीं. यू गेट द पॉइंट? देन you सर require E is Q into V. Yes. Sir, but I was talking about like you helped us derive the formula, but sir, the formula was already given by you of lambda, and sir, after putting the value of kinetic energy, lambda's value वही निकल गई. So Wait sir, करो, मैं I समझ was गया. able. I understood your point. I'll come to that. Just wait and see. Okay, Okay. sir. Yeah. First, is this clear or not? What we have done is clear. Like these values are same. Is that clear? Yes. Everyone. ठीक है, आपने लिखा लैम्डा इज h अपॉन p और h अपॉन रूट टू me और h अपॉन रूट टू m काइनेटिक एनर्जी और h अपॉन रूट टू qvm, ये सारे ही एक हैं. बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सारे एक, और सारे एक मैं बोल भी रहा हूँ, और एक होने भी चाहिए. अलग अलग कैसे हो जाएंगे? ओके. अच्छा, हाउ टू गेट ई इज क्यू वी, बेटा ये 12th में आएगा. जब आप पढ़ोगे किसी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से मूव कराते हैं, तो वर्क डन क्यू डेल्टा वी होता है. ओके, चार्ज इनटू द चेंज इन पोटेंशियल इज कॉल्ड ई, और वी कैन से वर्क डन ऑफ दिस होल थिंग. एनीवेज, so let's proceed further on this part. Now this lambda is h upon root 2 qvm. It's again a formula which can be converted into these formula. इनको और आसान बना दिया उन्होंने. उन्होंने कहा भाई हम सारी जो वैल्यूज है रख देंगे, आपको सिर्फ सॉल्व करके आंसर निकाल के लेके चले जाना है. राइट? So for electron, what is the number? For proton, what is the number? For alpha particles, what is the number? You can get like that. And then they can ask which is more. So, but I think these values and all you can put. That's not very important. But the idea should be clear what we are doing here. Is it fine? Everyone, is it comfortable situation? So what you have done is you have put the values of H, charge, potential difference, mass, right? And then you're solving the given question. Is it fine? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये फॉर्मूले आपको नोट करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन मत हो दिमाग पे कि यार ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं क्या, नहीं करना है. ये वाला याद करना है क्या, कर लेना है. ठीक है, बता दूंगा मैं. आगे चलते हैं. If let's say you come across a question, d Broglie wavelength linked with a neutron. So lambda is h upon root 2 em. You put all these things, lambda comes out this 0.286 upon root e ev angstrom. So this formula also we use at number of places, but again, wherever it is needed, don't think you can derive these things. Just solve the upper values and lower values and get some number. I think basic thing you can take care of. Maybe you will spend 1 minute of time or 2 minutes of time, but it is worth doing that moment, right? Is it fine or not? Are you comfortable with this part? Yes, please. जरा 10 टाइप कर दीजिए अगर बात समझ में आ रही है तो. हाँ यार, समझ में तो आ रहा है. सर क्या कहना चाह रहा है? सर कहना चाह रहे हैं कि भाई h की वैल्यू रख दो, q की वैल्यू रख दो, m की वैल्यू रख दो, जो भी होगा निकल के आएगा कोई कांस्टेंट. बचेगा वेरिएबल क्या? v. राइट? चलिए. So the next thing here is
derivation of angular momentum from d Broglie's wavelength. So now I'm going to show you something very important. So let's say you are in n equals 1, or we can say ground state. Okay. Or let's say you are in n equals 2. N equals 2. So n equals 1, there is just one wave as per this de Broglie concept. As in, the energy will decide, energy of the given system will decide how many waves are there. For example, n equals 1, there is just one wave. And when I say one wave, look at the wave first. What is this pink thing I've drawn? What is this one wave meaning? So ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. If this is the situation, your wave starts here and ends here. And if I take these 2 points, this point and this point, let's say call them A and B. So A and B both were here. Is the whole thing clear? That this is just one wave wrapped in a form of a circle, and then you're using it. With the same logic, n equals 2 should have how many waves? Type in chat box. अरे 1 के पास अगर 1 wave है तो 2 के पास कितनी waves होनी चाहिए? कितने हो जाएंगे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. 2 वे हो जाएंगे. अच्छा जी, ये लेंथ कितनी है बताएंगे? 2 पाई r, बिकॉज ए से बी की लेंथ है. अगर ये सर्कल r है, सो वैल्यू कितनी होगी? 2 पाई r, बिकॉज सर्कमफ्रेंस की लेंथ यही होती है 2 पाई r. ए बी की केस में, लेट्स से इस केस की बात करें, right? Now in this case, how many waves will be there? There will be 2 waves. What are those 2 waves? I'll show you. So one wave is like this. And then right? So this time, if you just cut it from here, open it up, you'll get 2 waves this time. Let's say this is one and the second. Okay. Are you okay with this whole discussion? Everyone, please let me know. Is it becoming more difficult and complex, or is it understandable? All right. Can we understand this whole thing, बच्चों? सब लोग नहीं बोल रहे यार. Frequency, isn't it? ये तो हो गया, पुराना डाउट है. Okay, complex है. Why they are not fully circular? Circular ही बेटा, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये क्या है? ये वेव फॉर्म में है, और जिस भी आप एनर्जी लेवल पे हो, उसमें उतनी ही वेव्स होंगी as per him. So for example, if you are in 2 pi r number 1, you can write this is 1 lambda. If you are at 2 pi r2, okay, 2 pi r2, check it. If I generalize it, 2 pi rn is n lambda. Yes or no? Try to answer बच्चों. 2 pi rn कितना होगा बच्चे? n lambda हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? अरे 2 pi r1 1 lambda था, 2 pi r2 2 lambda हुआ, 2 pi r3 3 lambda हुआ, तो 2 pi rn क्या होगा? n lambda होगा. ये 2 pi rn n lambda का मतलब क्या है? अगर आपके पास लेट्स से ये मैंने ड्रॉ किया
और लेट्स से थर्ड के लिए है, तो थर्ड में 3 वेव्स आनी चाहिए, 1 2 3. Take this in, take this in, go to third orbit and then connect A and B. Once you connect A and B, you'll get a kind of, yes, circle. Simple. And that is basically circumference we are talking about here. I hope the whole discussion is clear. Sir. Yeah. Sir, but R is equal to 0.5 n square by R, Z. Correct. So like n square here is an like orbit number. Now if the orbit number is That is here also, there square, also. That's same, right? Both the sides. Here also is orbit number, there also is wave number, right? Number of waves. In this case, n lambda is what? How many waves are there? And this number of waves are same as the number of orbit you are standing in. So if there are 3 waves, that means you are in n equals 3. If there are 4 waves, then it is n equals 4. Clear? Sir, but it is n square, so won't it become the square of it? N square. Acha, you are saying R is n square. Then lambda will take care of this, no? Why are you worrying about that? See, 2 pi Rn is n by lambda. You are saying that this Rn is n square by z. Let it be. If it is n square by z, there is 2 pi also. Yes or no? Okay, sir. Yeah. So 2 pi r is n lambda and lambda is h upon p. क्या कर सकते हैं भाई इसमें से? कुछ निकाल सकते हैं? Hello, sir. Yeah. Good evening, sir. Yeah. Sir, Karthik you are speaking. saying that 2 pi r1 is equal to 1 lambda. तो सर जैसे ऐसे होएगा तो इसका मतलब जो हर एक लैम्डा की लेंथ इक्वल है. करेक्ट. बिल्कुल सही बोला आपने. बिल्कुल सही बोला. लैम्डा की लेंथ कहाँ पे इक्वल है? लैम्डा की लेंथ कहाँ पे इक्वल है? सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा. From one shell to another shell. हाँ? From one shell to another shell. नो नो. When see, जो हमने लैम्डा अभी पढ़ा है लाइमन सीरीज, बैमर सीरीज में, उसमें क्या किया है? उसमें हमने इस ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वेव निकाला बेटा. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली ही आस्क्ड. कितने को समझ में आया क्वेश्चन? पहले तो व्हाट ही इज आस्किंग इज, यहाँ पे जो लैम्डा है इसके बीच में जो हम बात करेंगे, इनके तो वैल्यूज अलग अलग हैं. अगर अलग अलग हैं तो ये वैल्यू कैसे सेम है, राइट? यही तो क्वेश्चन आपका. ये ट्रांजिशन का लैम्डा है बेटा. और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? वो है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जहां पे डी ब्रॉगली बात कर रहा है अपनी वेवलेंथ की. डी ब्रॉगली वेवलेंथ. आप दो चीजें मिला रहे हो. आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ को बोलो कि वो वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है. मेरे पॉइंट समझ में आ रहा है? कहां पे दिक्कत है? You are telling de Broglie's wavelength is the wavelength which is used in Lyman series. That's completely 2 different things altogether you're mixing. Lyman series में क्या करते थे? We do transition, we get transition, we get energy coming out or energy being given. We are counting their lambda. That's a different game altogether. यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप given orbit के अंदर आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन वेव मोशन में मूव करते हैं. दो अलग अलग बातें हो. ये कितने लोगों को ये कंफ्यूजन है? पहले तो ये बताओ. एक बार चैट बॉक्स में 5 टाइप करो अगर ये कंफ्यूजन किसी को. वैसे इतना डीप कभी लोग सोच पाते हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन ही हैज आस्क्ड. टाइप 5 इन चैट बॉक्स एंड टाइप 6 इफ देयर इज नो कंफ्यूजन. सर सब क्लियर है मेरे को. ये लैम्डा कौन सा मेरे को पता है, डी ब्रॉगली है. ओके, काफी लोगों को क्लियर है, काफी लोगों को नहीं समझ में आया. चले मैं फिर से बताता हूँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. पहले वहां पे आओ. व्हाट आर वी डिस्कसिंग? We are talking about de Broglie's hypothesis, right? और de Broglie's concept. ये concept क्या करता है? ये बोलता है पार्टिकल और वेव नेचर दोनों एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन के. अच्छा ठीक है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वेव नेचर का कुछ लैम्डा होगा. उस लैम्डा की बात कर रहा है. इज इट क्लियर? इसका डाउट था? कार्तिक, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yeah. So see, I'm again writing it and I'm again highlighting it now. Lambda de Broglie is not same as lambda of different series. दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं. अगर आप उन्हें मर्ज कर रहे हैं तो वो गलत है. They are not same. Lambda de Broglie एक अलग चीज पे बात कर रहे हैं, which is talking about, yes, in the given orbit
द वेव नेचर जो आपने भी इसको किया, इसको इक्वेट करके आप ला रहे हो. सो पूरा जो कैलकुलेशन है वो ये हो गया 2 pi r n is n lambda, and yeah, another thing which we know is mvrn is nh upon 2 pi. अगर आप इन दोनों चीजों को क्लब करते हो ठीक से, then you can derive also that lambda is h upon mv. क्योंकि किसी ने पूछा था कि सर lambda is h upon mv, ये मिला कहां से? So this is angular momentum part. This is every orbit will be having same waves number as compared to the value of n. If you are in three orbits, orbit number 3 waves will be there. Orbit number 4 waves will be there. For example, I'll just draw one diagram. If it is n equals 4, I must draw four what do you call waves in this case. Wave number 1, wave number 2, wave number 3, and wave number 4. Fine. So what is the value of lambda that we are looking forward? We can say 2 pi is multiplied here. So mv is, yes, how much? 2 pi is multiplied here. mv is nh upon, yes. कर लोगे, देखो ध्यान से डिवाइड करके आप ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 2 pi बचेगा. rn वारन सब कैंसिल, राइट? करके देखिए एक बार, खुद सॉल्व करें. क्या रिजल्ट निकल के आता है? लैम्डा इज h अपॉन mv आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख गया कि लैम्डा ही h अपॉन mv है दोनों को यूज करने पे. और एक काम करेंगे सारे लोग, फटाफट n equals 5 के लिए मेरे को वेव बना के दिखाओ. इफ दिस इज n equals 5, तो उसमें वेव्स कैसे दिखेंगी जरा ड्रॉ करें, खुद ड्रॉ करें. एवरीवन पार्टिसिपेट. Sir, यस. sir, can we say like the wavelength which is given by de Broglie is about the electron in how it is moving in a wave? That's what we are discussing, correct? And if From- in series, like alignment series and all the series, it is about the photon which is given to that particular electron and it is absorbing it and it's going. So that photon's wavelength is this series one. Correct. Perfect. Okay. That's true. Fine. Yes, sir, got it. I hope it is clear, everyone. So first you try to understand that both are different lambda. कुछ लोग lambda same लग रहा है, ऐसा नहीं. Right. n equals 5 ड्रॉ करिए. Quickly ड्रॉ करिए. n equals 5 कैसे ड्रॉ करेंगे? So इसके 5 सेगमेंट करने पड़ेंगे अपने को. 5 सेगमेंट का मतलब होगा 72 डिग्री का एंगल, तकरीबन ऐसा आएगा. Okay, then you can say wave number 1, wave number 2, 3, 4, and 5. Check. So can we say, if I cut it open from here to here, if this radius is Rn, where n is 5, I can say that 2 pi Rn is the length of the whole thing, which is n lambda. So 2 pi Rn is n times lambda. Which lambda? Lambda is wavelength of the given thing, right? Okay, now if you want to put the value of Rn, it is n square by z into 0.529 angstrom. एक बच्चे ने पूछा था सर n का क्या होगा? बेटा n कट जाएगा उसके, और क्या होगा? ठीक है, बाकी सारी चीजें तो रहेंगी एज इट इज. कर लोगे? So ये आपका वैल्यू, ये भी सही है. Is also correct. There's no problem. Fine. चलिए. There will be 5 ways. Very good. बना पा रहे हो सब यार? कर पाओगे? अरे कर लोगे? हाँ भाई हाँ, कर लेंगे सब कर लेंगे. 2 pi r and 5 लैम्डा में क्यों बोल रहा हूँ बार बार? जब इसको काट के फैलाओगे, इसको काट के फैलाओगे तो उसमें कितने होंगे वेव्स? 5 वेव्स होंगे. 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव एंड 5 वेव्स. सो यहाँ से आपकी लंबाई कितनी हो गई? 5 लैम्डा. इसीलिए बोल रहा हूँ 5 लैम्डा. I think that must be clear. I'll not use word should be clear. That must be clear to everyone now. Great. So this is done.
and this whole discussion is done. MVR is energy 0.2 pi. This you can prove, or this you can use to prove other things. It's up to you. What are you going to do? Try this question. What is de Broglie wavelength for a hydrogen atom moving with a velocity of 2000 meters per second? Atomic mass is given. Try. Try to answer this question. Try to answer this question, please. Anyone? AMU is written. You have to write it. So upon any field, it is in gram. Multiply 10 power minus 3, that is in kilogram, which is the standard unit. And velocity is correct. Now, this whole thing, if we solve, we'll get the value of lambda de Broglie. Is it clear to everyone? I understand. Just for simplification purpose, you can use 1.00797 as 1.008. That's fine. Can you close this question from your end? The only unknown is lambda dB. Rest all is in front of you. Put the values, get the answer. Fine. कितने बच्चों को समझ में आता है सर? 5 टाइप कर दीजिए जल्दी से. 555 अगर समझ में आता है तो. बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. चलिए, तो अपना अगला डिस्कशन शुरू करते हैं. डी ब्रॉगली भी आप सीखे हो काफी हद तक. स्टेप बाय क्वेश्चन भी करा देंगे थोड़े बहुत और प्रैक्टिस जाएगी. अगला डिस्कशन शुरू करते हैं अपना क्वांटम नंबर्स. कितने लोगों को पता है क्वांटम नंबर होते क्या है यार? जरा आके एक बार माइक पे बताओ मेरे को. सर क्वांटम नंबर ये होते हैं. एनीवन? जल्दी से बताइए माइक पे. तब तक मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ. आप बोलोगे सर क्या ज्योग्राफी की क्लास है? Excuse me, sir. यस. Sir, like I had not understand like why we divided by Avogadro number in previous question. Okay. What is 1 AMU? How many grams? 1 AMU is gram per mole. 1 AMU is gram per mole. No, I'm asking 1 AMU in terms of gram is how much? 1 upon any gram you've done? Yes, sir. AMU is any time smaller? Yes, bache. That's what we have done. So the value is given, I'm dividing by NA to make it grams. And then 10 power minus 3 to make it kilograms, which is needed. Isn't it? Okay, sir. Okay, बच्चे. और कोई डाउट किसी बच्चे को? डाउट जरूर पूछो यार. अच्छा, ज्योग्राफी कहाँ से आ गया? बताता हूँ कहाँ से आ गया. देखना यार, मेरे को एक यहाँ पे बैंगलोर में एक लेटर भेजना है. ठीक है, यहाँ पे एक जगह है बैंगलोर में, मेरे को एक लेटर भेजना है किसी फ्लैट के पे, और उस फ्रेंड का नाम है लेट्स से रॉबर्ट. अब रॉबर्ट को लेटर भेजना है आपने. कहाँ भेजना है? BLR, बैंगलोर में भेजना है. बैंगलोर है कहाँ? इंडिया में. इंडिया कहाँ है? वर्ल्ड में.
वर्ल्ड कहाँ है, ठीक है, वो पता है। अब बैंगलोर में ऐसा तो नहीं कि आपने बस रॉबर्ट लिखा बैंगलोर में डाल दिया पहुंच जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। बैंगलोर आएगा तो फिर क्या होगा, किसी लोकेशन पे जाएगा। सो लेट सपोज रॉबर्ट जो है वो जयनगर में रहता है, बैंगलोर में। जयनगर में एक ब्लॉक में होगा, लेट से थर्ड ब्लॉक में रहता है, या लेट से फिफ्थ कर लेते हैं, थर्ड ब्लॉक में बाकी सारी चीजें फिफ्थ ब्लॉक मान लेते हैं। फिफ्थ ब्लॉक में 110 इसका प्लॉट नंबर है। सुनते जाना, 100 प्लॉट नंबर में जब अंदर जाएंगे आप, तो वहां पे एक बड़ा सा मल्टी स्टोरी बना हुआ है, उसके 7th फ्लोर पे रहता है। 7th फ्लोर पे उसका डोर नंबर है 703। ये बात समझ में आती है? So what you have to do is, if you want to specify the postman or the person who is getting it done, you need to specify the exact coordinates or exact things for the person. That okay, where exactly and how we'll be sending it. Let's say you don't put the flat number, it is difficult to send it. You don't put the floor number, again this problem. You don't put what is let's say which block is, then again a problem, right? Isn't it? So these things will be required or needed before you do that, isn't it? What we are understanding that with all this information, I can track Robert, I can get exact address of Robert. Similarly, as per the old proposition or old views, electrons are static, or we can define the position of electron as per the old views. Now the modern theory has rejected the electrons are moving all across, right? So as per the old views, what happened that there was a tendency to give their address, or we can say locational address, if they are inside that location or not. So what they did, they bring the concept of quantum number, mentioning different type of quantum number, tackling different kind of features, and then ensuring that every position has some kind of mapping or some kind of clear position. Okay, this is this position. Is it fine? So how many of you know what is like type of quantum number? Number of quantum numbers type. How many are there? Anyone? You know? How many type of quantum numbers do you know? I'm asking a very simple question. Please answer. Okay. Principal azimuthal magnetic spin. Very good, Jivra. बहुत ही बढ़िया. 4 होते हैं. Very good. सभी को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. So जो 4 आपके क्वांटम नंबर्स हैं, उसको आपने लिखा प्रिंसिपल. अब ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग ध्यान रखना है, बच्चे बहुत गलत करते हैं. कौन सा होना चाहिए, पीएलई या पीएल? बताइए टाइप करके चैट बॉक्स पे. विच वन शुड बी करेक्ट, प्रिंसिपल या पीएलई? इट इज पीएल. इसका मतलब होता है मेन, मुख्य आदमी. स्कूल का प्रिंसिपल ये वाला स्पेलिंग होता है. अगर गलती से आपने लिख दिया प्रिंसिपल, दैट्स कॉल्ड या थ्योरी एंड प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल, ये अलग है, राइट? So principal is main. Then like that, azimuthal. Okay. Then magnetic. And then spin quantum numbers. Right? So these are the names of quantum numbers that you must know. What is principal quantum number? That is the orbit number, you can say. That you can say energy level number. That's the main. For example, if I say you are in n equals 2, somewhere, 2s, 2p, anywhere, then this 2 is what? It is principal quantum. Okay. Any problem to this? So from here, we'll initiate in the next class, right? Because I don't want to drag it much. Quantum numbers will be the discussion of the next class. Please try to revise what all we have done. We'll try some questions maybe.
चले, कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ सकते हैं. एंड मीनवाइल विकी सर विल ज्वाइन आल्सो एंड वी विल सॉल्व वन और टू क्वेश्चंस एज वेल. ये सब होता रहेगा, बट अभी फटाफट जल्दी से जॉय पूछो. ओके, राइट. Sir, Yeah. sir, I am not able to understand failure of Bohr model. ओके ओके, सो इसको ऐसे बहुत आसान तरीके से समझाता हूं मैं आपको, समझ में आएगा. बोर मॉडल की पॉस्टुलेट क्या थी बेटा, बताएंगे? बोर मॉडल ने Sir, क्या क्या it is प्रपोज किया? व्हाट इज प्रपोज्ड बाय बोर्स मॉडल? only